During the promotions of the upcoming movie Moti Choor Chakna Choor starring Nawazuddin Siddiqui and Athiya Shetty, Nawazuddin Siddiqui ने की Zoom से exclusively बात and during this interview उन्होंने कहा कि अब से वो बस उस तरह की movies करेंगे जो audiences को पसंद आती है. Let's hear the whole interview and see what he had to say. नहीं, मैंने सोचा था, अब मैं गलत साबित हो गया हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपनी टाइप की फिल्में करूँगा, लेकिन उनका हशर जो मैंने देखा तो फाइनली मैं इसी रिज़ल्ट पे पहुँचा कि जो बाज़ार में चलता है वही करो. इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है. सच में. लेकिन मुझे फिर भी लगता है आप कोशिश करते हो उसको लेकर. वो कभी कभी कहते हैं ना कि चोर चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता. तो वो एक हैबिट है उस तरह की फ़िल्म करने की. जैसे अभी एक रोम रोम में की है मैंने फिल्म, फेस्टिवल की फ़िल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है. बट वो एक हैबिट के अकॉर्डिंग वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शीशे में जब अपने आप को देखते हैं तो एज एन एक्टर अपने आप को जवाब देना होता है. तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मैं अपने एक्टिंग के लिए, अपने एज एन एक्टर सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ. कुछ फिल्में होती हैं जो बाज़ार के लिए करनी पड़ेंगी. हम कुछ देर पहले ही बातचीत कर रहे थे. आई थिंक ये बहुत कहा जा रहा है कि यार ये अच्छी फिल्मों का दौर है और अच्छी फिल्म बनाओ तो ज़रूर चलेगी. और जैसा आपने कहा, आई थिंक रोम रोम को ऑलरेडी सराहा जा रहा है इंटरनेशनली और अभी आने वाला. आपको लगता है कि ये बात में सच्चाई है? आपको लगता है कि फिर भी आप क्या उम्मीद रखते हैं हमारी ऑडियंस से? नहीं, मैं ऑडियंस से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखता हूँ. ऑडियंस को ऑडियंस की तरह की फिल्में होनी चाहिए जिसमें 4-5 गाने हो, ह्यूमर हो, कितना भी वल्गर ह्यूमर हो, है ना, वो हो. और थोड़ा सा बाद में ट्रेजिक, थोड़ा सा सैड कर दो, इस पर रोना आ जाए ऑडियंस को. ये इतना ऑडियंस को समझ में आता है, वही देना चाहिए ऑडियंस को. लोगों को एक तरह के रोमांस देखने की आदत है, फोटोग्राफ जैसे रोमांस देखने की लोगों को आदत नहीं, जो उनकी ज़िंदगी में रोज़ होता है जी, है ना. तो स्लो पेस था फिल्म का, तो इतनी मतलब वो बैठ के स्लो पेस वाली फिल्म देखने की हैबिट शायद बिकॉज ऑफ रिमोट कंट्रोल की वजह से वो ख़त्म हो गई है, या मोबाइल्स, ये वो सब जो ऐप्स आते हैं खट खट टिकटॉक की है, वो उसकी वजह से ख़त्म हो गई है. तो वो बहुत ही शांति से बैठ के देखने वाली फिल्म थी. बट अनफॉर्चुनेटली वो शांति से देख नहीं पाया कोई इस फिल्म को. जैसा कि मुझे एक चीज़ लगा ट्रेलर से कि इसमें फिजिकल कॉमेडी नहीं है, एक बहुत ही सिचुएशनल और एक अनइंटेंशनल सॉर्ट ऑफ फनी इंसान है जिसका आप कैरेक्टर प्ले कर ले, जो मुझे लगता है कि उस तरह कॉमेडी और भी मुश्किल होता है करने में. इसमें कॉमेडी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली. उसमें सिचुएशन ही ऐसी, वो कैरेक्टर ही ऐसे हैं. उसमें डेलिबरेटली हम पंच मारने की कोशिश नहीं कर रहे कि देखो यहाँ बगल से मेरे बदबू आ रही है और ये हो रहा है और वो आ रहा है. ये पंच मारने की कोशिश नहीं कर रहे. वो कैरेक्टर इनोसेंट कैरेक्टर हैं, और जो घरों में जो हल्की फुल्की जो बातें होती हैं वो बातें हैं उसमें. वो कॉमेडी नहीं है कि अब देखो मैं तुम्हें कॉमेडी करके दिखाऊंगा, वैसे नहीं उसमें. Nawazuddin Siddiqui there speaking his truth and what he feels the audience likes in the industry. Well, Gunjan, ये actually काफी बड़ा खुलासा है, एक बहुत ही बड़ा statement है from Nawazuddin Siddiqui, a man who's actually stood his ground and said कि मैं वैसी फिल्में करूँगा जो मुझे पसंद है, जिनमें मैं विश्वास रखता हूँ, the ones that I believe in. And here we have Nawazuddin Siddiqui finally succumbing and saying that मैं वैसी फिल्में करूँगा. अब मतलब अगर तुम्हें slapstick चाहिए तो मैं slapstick करके दूंगा, अगर तुम्हें commercial फिल्म चाहिए तो मैं वो करके दूंगा. So I just hope this is kind of a phase and Nawazuddin Siddiqui actually does go back to doing the kind of films and content that he is best known to be doing. But I think he has his own reasons to say what he's saying, क्योंकि एक तरफ जहां उनकी मंटो है which was hugely critically acclaimed, वहीं पर उनकी the latest movie Photograph इतनी ज़्यादा नहीं चली. Like in fact people just never landed up at the theaters to watch the movie. The reality is कि you know, when you have a star cast like Sania Malhotra and Nawazuddin Siddiqui, it doesn't click with the masses and it doesn't even get the chance that it deserves to even prove कि भाई movie कैसी थी, बढ़िया थी, पसंद आई, या परफॉर्मेंसेस तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती. Yeah, no, these are really good films which are critically acclaimed and we know that. And you know, this is something, you know, if we look back in the 70s and 80s, this would have been considered art house cinema, which was always kept, you know, away from, you know, your mainstream commercial cinema. And these films never really made money back in the day. I mean, there have been incredible films with incredible actors. Like I remember there was this film that had released, you know, back in the 80s, which, you know, starred the very talented Smita Patil ji and Nawazuddin Shah, and the film was called Mirch Masala, which was such an incredible film, but it didn't really do well anywhere, you know, for that matter. It was later acclaimed and later people started talking about it. Right. And there have been films like that in commercial cinema that we have spoken about on this show itself. But I just feel like, you know, there's a pulse that an audience has.
All right, and you cannot take away from that. Now, one has to understand what movies mean to audience in this country. Yeah. You know, yes, we are a society which is evolving. We are an audience which is starting to understand the nature of life. And yes, we've spoken about the fact that filmmaking is a reflection of life. But we cannot forget the fact that we are a country which has a lot of struggles, which has a lot of trials and tribulations, where the audience goes to watch a film to get away from that. Yeah. We don't want to be constantly reminded कि हमारी जिंदगी इतनी खराब है या हम इतने backward है या ये हो रहा है हमारी life में. I mean, so that is something that is a reality. Like, you know, if you talk about in the 1920s in the US, when the recession hit the United States of America, the biggest and the most successful business was the entertainment industry. Why? Because people wanted to forget their lives and go and actually watch films and feel refreshed and feel, you know, इसीलिए तो यश चोपड़ा जी हमें स्विट्जरलैंड की सैर कराते थे अपनी फिल्मों के जरिए. And you know, whether it was Yash Raj films, whether it's Dharma films, we see larger than life canvases, we see the song and dance, to be able to forget that. So I understand the audience pulse, but I also at the same time understand Nawazuddin Siddiqui's frustration with the fact that as an actor, as a performer, as an artist, he's not being able to do what he really truly believes in. Exactly, and like you said, like there is understanding the pulse, but more than else also, while our strength is ki India is a huge country, we have those numbers, but those same numbers, I think, Manish, are so different, you know, because these are the people who, I mean, दिस इज द टेलर मेड ज़माना, राइट, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट से लेकर आपके खाने की चीज़ टेलर मेड बनती है आपके लिए. वहाँ पर हम एक मूवी वी वांट टू सेल इट टू बिलियंस ऑफ पीपल, understanding that the similar taste is what will जो सबको भाएगा, you know. So it is a huge ball game, and the fact that there is a generalization that happened with the masses, there is a general taste that you have to like कि सबको पसंद आ जाना चाहिए, right? आप कुछ so I feel like that is a risk that Bollywood is playing every day. We can't always only look at one part of the place and say, oh, Bollywood is still not ready. Bollywood is ready, but as a country, the numbers make it so much more difficult to say this is what we like and this is what we not like, because who are we speaking for, and whose you know, like whose place are we taking right now? Yeah, you know, but the good news is, and I'm going to try to sum this up really quickly, that yes, we are a large demography of people from different walks of life, different languages and all of that in this country. But the one pulse that does exist amongst the audience anywhere in this country, forget this country, all over the world, is that we like to be entertained. We like to feel good or feel something when we watch a film, which is why we like an emotion to be evoked. So my request, मेरी दरख्वास्त ये होगी नवाजुद्दीन Siddiqui ji से कि, you know, I think there are so many platforms that are you know that are open today, and there is this entire plethora of people who are loving the kind of films that you do. So please don't stop doing the films that you're doing. और हम देखना चाहते हैं इन फिल्मों को. We want to be entertained by you in you know, in a way that nobody else does, and at the same time commercial cinema karo. Your film Motichur Chaknachur looks fantastic, which by the way releases on the 15th of November. So those of you sitting at home watching the show, don't forget to miss this film. Watch Planet Bollywood from Monday to Friday at 9 p.m. only on Zoom.